Assalamu alaikum. Hello and welcome to the Mansuri Show. I'm your host Arif Zaffar Mansuri and we have a great episode for you today. आज की एपिसोड के दो हिस्से हैं. पहले हिस्से में हम आपको ले चलेंगे बर्कले कैलिफोर्निया, जहां पे हमारी मुलाकात चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध जनाब सैयद मुराद अली शाह साहब से हुई और उस मौके पे उन्होंने हमें एक खुसूसी इंटरव्यू इनायत फरमाया. और उसके बाद हम आपको ले चलेंगे स्टैनफोर्ड कैलिफोर्निया, जहाँ पे के पाक-U.S टेक इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस का इनकाद हुआ, जिसका इफ्तिताह एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू यूनाइटेड स्टेट जनाब रिजवान सईद शेख साहब ने फरमाया. तो आइए पहले ये इंटरव्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध जनाब सैयद मुराद अली शाह साहब के साथ मुलाहिजा फरमाइए. अस्सलाम वालेकुम. We are very fortunate today to have the Chief Minister of Sindh, Mr. Murad Ali Shah with us today. He is visiting Bay Area. He is leading a delegation to foster a collaboration between Design School at the Stanford and the Institute of Business Administration in Karachi. First of all, I'd like to welcome you to our program today. Thank you very much for having me. He's the patron of IBA, the Institute of Business Administration in Karachi. He's led a delegation and they have formed a collaboration between the Design School at Stanford and Institute of Business Administration in Karachi to establish Design Institute in a public university. So I would like to just briefly, he's been the Chief Minister of Sindh this is his third term. He is a graduate of NED Engineering University, Karachi. He also holds 2 master's degrees from Stanford. He's has worked for national and international companies in Pakistan and abroad. He has tremendous experience in business and finance. He's served in many positions that are related to engineering and finance. In 2002, he got involved with the politics, and then in 2016, he became the Chief Minister of Sindh. We're very fortunate to have him with us today. So I would like to begin by asking you that being an alumnus of Stanford, how does it feel to be back in Bay Area for this collaboration between IBA and the design school at Stanford, and what is the significance of this collaboration for Sindh, for Pakistan? Thank you very much for having me here today. Mansuri Sahab, a couple of months ago, the executive director of IBA Karachi came over and said that they were doing this event and they had spoken to the Stanford University Design School, which is a fairly new concept, though. I visited the design school this morning. They've been doing this since 1962. That's when they had the first course at the design school. But as a department or as a degree awarding institute, they started much later in 2006. So it's a fairly new concept. And they've been very successful, and it's one of the leading schools right now at Stanford University. When Dr. Arif Zaffar Mansuri, the executive of Karachi, came and said that they were collaborating with Stanford, it was something that I was really, really interested in. And I told them that they'll have the complete support of the government of Sindh in this. And my personal support also as being an alum of Stanford University, I was very, very excited to have Stanford come to Karachi, one of the leading business schools in Pakistan, and a public school owned by the government of Sindh. And what we're hoping out of this is that not only would the faculty and the students of IBA benefit, but this would be transferred and transmitted to the other public schools in the province of Sindh to get this experience of attending courses at Stanford without actually spending the money to go there. So really, really excited about it and looking forward to a successful story. That is a really achievement of a very great milestone to establish a design thinking lab in Pakistan. So what do you think will be the impact of this design thinking lab on the education and innovation in the public sector in Sindh and in Pakistan? Teaching
when we were studying and our teachers were teaching us, unfortunately in Pakistan the teaching methods have not changed over years. And now, especially with AI coming in, students may not even need teachers going forward. They learn everything from machines. And that's not a very sort of welcome thing to look towards. And that is why this design school, the concept here at Stanford, where they teach you actually identify problems and then do problem solving. What I learned at the design school this morning when I went to visit there is that generally what they teach us in school is problem solving without assessing if that problem exists in that society or not. So the age-old teaching methods which we're still following in Pakistan, this would try and change that. How's the Sindh government planning to support this design lab in terms of resources, policy framework, and funding to ensure the sustainability of this initiative? IBA is a public sector school. It's sort of under the patronage of the government of Sindh, and the funding is provided. Most of the funding is provided by the government of Sindh for it. What we have promised IBA is that they need to raise certain funds in order for this program to be successful. And what we promised IBA is that the government of Sindh is going to match, or not match actually, we're going to put in 50 cents for every dollar that they raise for this initiative. And hopefully with the support from the government of Sindh, they'll be able to raise the finances to make this program successful. So what is your plan to engage the private sector and industry leaders to collaborate with the design lab, and how can this initiative help bridge the gap between the industry and the public sector? That's a very good question. The problem that we have in Pakistan is that the industry and our education institutions have not been working together. For example, whatever the industry requires, that is not being transmitted to the universities, and that is why we've got a mismatch. We've got a different skill set of graduates or students coming out who are not able to find proper jobs in the market because they're not that skill set has not been developed. And what we plan to do with this design school is that IBA has already talked to most of the blue chip companies in the province of Sindh and Karachi especially, and invited them over so that they can send their employees to the design school, and there'll be a two-way learning process. When their employees come to the design school, they would actually the bridge between the industry and the academia would be filled up. Mm-hmm. So, Mr. Chief Minister, what message would you like to send out to the students, the faculty, the alumni of IBA, how they can really benefit from this opportunity in innovation and design thinking? The very purpose of doing this collaboration is, as we all know, in the 50s, the IBA was actually established when the University of Pennsylvania supported it at that time in the 50s, when professors from the Wharton School at the University of Pennsylvania came over and developed the curriculum for the Institute of Business Administration. And this collaboration back in the 50s paid dividends, and IBA very quickly became the leading business school in Pakistan, which still is. But now going into the future where the major issue is designing your curriculum, designing your student in such a way that he becomes profitable and he becomes economically beneficial both for himself and for the country. That we believe that with the Stanford Design School coming in and this new concept of designing the life of a student in the future,
that will go a long way, and this will hopefully, what we did in the 50s has paid dividends. But now we need to not only think out of the box, but actually break that box and come up with new initiatives. As a political leader and an engineer, how do you balance the demands of governance with promoting innovation and modern educational practices, especially in a province with diverse developmental needs like Sindh? Problem has been, and that's not only the province of Sindh, but the entire country. Unfortunately, we've not been able to expand our resource base. Education is expensive, research is expensive, and you can't have good education without good research. And what we've been doing over time is that we've not spent enough on research, and that's why we've not been able to produce good teachers for the next generation. So what the government of Sindh is doing right now is, and what we've done is, for example, we've just started a new program where we're going to, for the first year, train 10,000 students, and these are students who could not get into a medical college or an engineering college, but they tried, and they, instead of wasting them, give them a certain skill set. And what we're doing is we have 3 universities in the province, one in Karachi, one in Hyderabad, and one in Sakkar. So the entire province is covered to give the skill set to the new students. At the same time, what we need is to set up good research institutes which take the lead and have more collaboration with the industry, so that we can match the skill set, the requirement of the industries matched by the universities. And the government of Sindh is working on these initiatives. Mr. Shah, on behalf of the Pakistan link, I'd like to thank you. You have been kind over the years to our publication in America, and I'd like to just ask you what your experience has been with the newspapers, Pakistan link. When I was here, I used to look forward to, and that time, and I'm talking about 30 years ago. Yes. And I remember very vividly, Sheikh Mohtama Benazir Bhutto once gave an interview to Pakistan, I was present. Absolutely. With her. Absolutely. And so it's a great service that you're doing to the community here, bringing back Pakistan to them and opening up Pakistan to the community here, so that if they want to pay back to the country, if they want to support the country, they can do it. And Pakistan Link over the years has been very, very, it's been instrumental in keeping that link, the very name of your publication, link back with Pakistan to the diaspora here in the US. Well, thank you so much, sir, and we wish you all the best and great success in your initiative. Thank you very much. Thanks. Thank you. Today we are at the Pak-U.S. Tech Conference in Stanford, California. Pakistan is rapidly becoming a hub of IT and IT ecosystem outsourcing. ये आज की जो कॉन्फ्रेंस है ये इसी हवाले से है. यहाँ पर जो पाकिस्तान में IT इंडस्ट्री है उसको सिलिकॉन वैली की IT इंडस्ट्री से कनेक्ट करने के लिए ये एक कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द की गई है और हम आज आपको इस कॉन्फ्रेंस की कवरेज दिखाएंगे. आइए हमारी ये रिपोर्ट मुलाहिज़ा फरमाइए. कैलिफोर्निया में वाक़या स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में मुनक़्क़द होने वाली पाक-U.S. टेक इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर मोहतरम रिजवान सईद शेख ने किया. लॉस एंजलिस में पाकिस्तान के कौंसलेट जनरल के ज़ेर एहतमाम इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी नजाद अमरीकी कारोबारी अफराद की क़ियादत में अमरीकी कंपनियों ने $20 मिलियन से ज़ायद की इब्तिदाई सरमायाकारी का ऐलान किया. इस कॉन्फ्रेंस को वज़ारत IT, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड और दीगर इदारों की मुआवनत हासिल थी. इस कॉन्फ्रेंस की निज़ामत के फ़राइज़ काउंसिल जनरल ऑफ पाकिस्तान लॉस एंजलिस मोहतरम असम अली खान ने बखूबी अंजाम दिए. पाकिस्तान की वज़ीर ममलकत बराए IT
मोहतरमा शाहजा फातिमा ख्वाजा ने हुकूमत की जानिब से IT सेक्टर के फ़रोग़ और $25 बिलियन के बरामदी हदफ पर रोशनी डाली। एम्बेसडर रिजवान शेख ने पाकिस्तान को टेक इन्वेस्टमेंट के लिए एक पुरकशिश और कम लागत मार्केट करार दिया। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी स्टार्टअप्स, जदीद IT इंफ्रास्ट्रक्चर और अमरीकी कारोबारी शिराकतदारों की दिलचस्पी को उजागर किया गया। इख्तिताम पर मोहतरम सफ़ीर ने डिजिटल ट्रिनिटी की तजवीज़ पेश की, जिसमें अमरीकी टेक्नोलॉजी, सऊदी सरमायाकारी और पाकिस्तान की अफरादी क़ुव्वत के इश्तिराक पर जोर दिया गया। इस मौके पर हमने कॉन्फ्रेंस के कुछ मुकर्ररीन और शुरका के ख़यालात रिकॉर्ड किए हैं। आइए ये रिपोर्ट मुलाहजा फरमाइए। मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान के सफ़ीर मोहतरम रिजवान सईद शेख साहब मौजूद है। मैं आपसे मालूम करना चाहूँगा कि आपकी आज जो कॉन्फ्रेंस है ये नहायत कामयाब कॉन्फ्रेंस है। मैं मालूम करना चाहूँगा कि जो इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में IT में या IT इकोसिस्टम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप उनके लिए क्या इंसेंटिव्स जो है वो ऑफ़र कर रहे हैं कि जो उनको उसमें अट्रैक्ट करें? देखिए, आपने देखा कि यहाँ पे बाकायदा प्रोजेक्ट्स जो है वो पेश किए गए हैं। सिर्फ पैनल या सिर्फ तकरीरें नहीं हुई, सिर्फ तबलीग नहीं की गई, बल्कि बाकायदा प्रोजेक्ट्स सामने लाए गए हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, इनके ज़रिए पाकिस्तान की IT के अंदर, IT के शोबे में जो सलाहियत है वो उसकी अक्कासी होती है। तो इस पे आपने देखा कि अभी तक जो है वो सिर्फ एक जो कंपनी है उनकी जानिब से अगले 1 साल के अंदर $12 मिलियन की सरमायाकारी की बात हो चुकी है। तो ये तो हो चुका है अभी, और अभी वक्त बाकी है और प्रोजेक्ट्स भी अभी प्रेजेंट किए जाएंगे। तो ये हमारे ख़्याल में तो एक न सिर्फ अच्छी इब्तदा है, बल्कि अभी हम कह सकते हैं कि इंशाअल्लाह एक कामयाब इब्तदा है। और पाकिस्तान बहुत कुछ दे रहा है इस शोबे में। हमारे यहाँ स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स बन रहे हैं। हमारी एक नौजवान जो है वो आबादी है जिसमें औसत उम्र जो है वो 22 साल। तो हमारा बहुत बड़ा मुस्तकबिल इससे वाबस्ता है, और ये एक ऐसा फल है जिसे बहुत जल्द, बहुत कम वक्त में हासिल किया जा सकता है। और पाकिस्तान मुस्तकबिल के लिहाज से एक ऐसा मुल्क बन सकता है जो आने वाली नॉलेज इंटेंसिव सोसाइटी जिसे कहते हैं, कि एक इल्मी मुआशरा होगा, उसके अंदर अपना दुरुस्त, अपना सही और अपना जो जिसका हमें हक़ है हासिल करने का, वो मुकाम हम हासिल कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मिस्टर आसिम अली खान साहब विद मी, आप आज की जो कॉन्फ्रेंस है उसके बारे में हमसे कुछ आपकी जो ओपिनियन है वो प्लीज़ शेयर कीजिए। जी थैंक यू आरिफ साहब, ये हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से पहला इनिशिएटिव है सिलिकॉन वैली में। आपको पता है सिलिकॉन वैली दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का एक सेंटर है, और हम बहुत अरसे से कोशिश कर रहे थे कि एक सस्टेनेबल, एक स्ट्रॉन्ग लिंकेज इस्टेब्लिश किया जाए पाकिस्तान की टेक इंडस्ट्री और सिलिकॉन वैली के दरमियान। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ये आप ने देखा है कि हमने ये इसका आगाज़ कर दिया है। हुकूमत की जो मुआशी पॉलिसी है उसमें डायस्पोरा को बहुत बड़ी अहमियत हासिल है। पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी में जो टेक कम्युनिटी है, हमें उनसे बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं कि वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रिज का काम करेंगे पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान। और आज आपने देखा है कि बहुत बड़ी तादाद में बहुत ही एकम्पलिश्ड न सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स, इन्वेस्टर्स और टेक प्रोफेशनल्स यहाँ मौजूद हैं। और इस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि अब बातों से आगे बढ़ के अमल की तरफ जाया जाए। और आज आपने देखा कि लोगों ने शुरू के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें न सिर्फ पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट प्लेज की है और अपने इनिशिएटिव्स और अपने जो है पाकिस्तान में प्लान्स। और आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ नोट की होगी कि एक मुस्बत फ़ज़ा है, पॉजिटिविटी है। लोग पाकिस्तान में पाकिस्तान की अहमियत को समझते हैं, और हमने नेगेटिविटी को डिस्पेल करने की बहुत कोशिश की है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा बहुत सारे लोग पुरुमीद हैं। और आपने एक और अहम चीज़ नोट की होगी कि पाकिस्तान की जो IT इंडस्ट्री में रॉ टैलेंट है उसको पॉलिश करके हम बहुत जल्दी गवर्नमेंट के जो IT एक्सपोर्ट्स के टारगेट्स हैं $20 बिलियन इन नेक्स्ट 7 ईयर्स, उसको पूरा कर सकते हैं। और ये कॉन्फ्रेंसेस हम अमेरिका के मुख्तलिफ कॉर्नर्स में करते रहेंगे ताकि पाकिस्तान की न सिर्फ IT की बरामदात में इजाफा हो, जॉब क्रिएशन हो, पाकिस्तान की मईशत को सहारा मिले, बल्कि डायस्पोरा को भी एक ओनरशिप मिले कि उनका पाकिस्तान से एक स्ट्रॉन्ग ताल्लुक़ है, एक स्टेक है। और ये ताल्लुक़ म्यूचुअली बेनिफिशियल होगा, जिसमें न सिर्फ हमारी यहाँ टेक कम्युनिटी और पाकिस्तान की टेक इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा, बल्कि पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात में भी बहुत मस्बत तब्दीली आएगी और बहुत मजबूत होंगे। I think this conference was really needed because there were a lot of people who still have this fear
that Pakistan doesn't have the talent to provide the back office or IT support and all that. I am a witness myself for using the back office for 2 years in Pakistan and finding excellent people there, and they really know how to do it. They actually are doing as good or even better job than my employees who are hired in America at 1/6 the cost. So let's say if it costs me $6,000 a month of a person here in America, it costs me $1,000 per person in Pakistan. And we already have 150 employees working for Kaaba Fusion through the company that we are using. But next is developing their pharmacy software. And there are about 45 employees that we'll be hiring just to develop the software, inshallah. And I haven't been back to Pakistan for 40 years, but I think that now with Masood Khan Saab, the previous ambassador, and CG Saab here, Asim in West Coast, I'm very interested in growing in Pakistan and expanding the operation. Well, actually, there's no question in my mind कि जो अभी इस train पे नहीं बैठा ना, जो nation, when I'm talking about the train, I'm talking about the train of AI, talking about blockchain technology, cybersecurity, and very, very importantly, robotics. It's इतना critical है इस वक्त दुनिया में इस train पे बैठने का, जो मुल्क नहीं बैठेगा इस train में, they will get left behind. And this will touch every aspect of your lives, right? From agriculture to machineries to building cars, education, and very, very importantly, at least for me in my field, medicine. So all of this is going to be affected by technology, particularly when it comes to AI and particularly to robotics. And then in the very, very near future, quantum computing. So सब चीज़ लगते हम लोग हमारे मुल्क को तैयार रहना है. इस कॉन्फ्रेंस के जो मेन मकसद है वो ये है कि किसी तरह से यूएस के अंदर जो डायस्पोरा मौजूद है उसको पाकिस्तान के अंदर इंगेज किया जाए मोर स्टार्टअप्स के अंदर, और किसी तरह से जो भी उनको कोई हेल्प चाहिए हो पाकिस्तान में एक्सपेंड करने के लिए, चाहे वो फंड रेजिंग की हेल्प हो, चाहे कोई गवर्नमेंट रेगुलेशंस के साथ प्रॉब्लम, कुछ भी हेल्प हो, हम ये चाहते हैं कि हमारी एम्बेसी और हमारे कॉन्सुलेट जनरल जो हैं उनकी हेल्प करें. सेकंड हमारा मकसद ये है कि हम एक पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और यूएसए के दरमियान में एक टेक्नोलॉजी ट्रिनिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कैपिटल आए सऊदी अरेबिया से, टीम पाकिस्तान से और लीडरशिप आए डायस्पोरा जो हमारा है. इन तीनों को मिल के हम सऊदी अरब में कंपनियाँ क्रिएट करें जो कि सऊदी अरब का भी भला करें, पाकिस्तान का भी भला करें और अमेरिका का भी भला करें. पाकिस्तान में गुड वैल्यू है, अच्छे लोग हैं, ऑनेस्ट लोग हैं, और सबसे बड़ी बात कि उनको अपॉर्चुनिटी कभी नहीं मिले मेरे लिहाज से. अब जैसी अपॉर्चुनिटी मिलती है वो अपॉर्चुनिटी वीज़े के शेप में आती है और फिर वो वीज़ा पकड़ते और फिर भागते हैं. और जाहिर बात है मैं भी भाग जाता, अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो मुझे भी वीज़ा लेके भाग. उनको मैं चाहता हूँ कि यार चलो तुम लोग तो सब तो लाखों के तादाद से, सैकड़ों के तादाद से अमेरिका तो नहीं आ सकते, और क्यों आए भाई आप लोग, हम लोग वहाँ क्यों ना अपॉर्चुनिटी लेके आए. वहाँ तो सप्लाई है टैलेंट की, वहाँ सप्लाई लोगों की, और क्यों मैं ये बार्गेन शॉपिंग करूं. अगर है पैसा, अल्हम्दुलिल्लाह आ रहा है पैसा. एआई की कंपनीज आजकल, इनसे बड़ी रिच कंपनी तो दुनिया में नहीं पैदा हुई है जितनी पैसे एआई पे आ रही है. आप देख लें दुनिया में, न्यूज़ में हर जगह छाई भी है. अगर ये इतनी इनकम आ रही तो इंसान कितना ग्रीडी होगा, कितना प्रॉफिट बनाएगा. शेयर करो वापस. तो ये अब मेरा मोटिवेशन ये है कि मैं वो अपॉर्चुनिटी जो मुझे यहाँ इस मुल्क में 33 साल में मिले, जिस पर मैंने अपनी ज़िंदगी बनाई है, वो मैं किसी और को क्यों ना दूंगा. आज की कॉन्फ्रेंस जो थी, आई थिंक द होल एजेंडा ऑफ टुडेज कॉन्फ्रेंस वाज टू क्रिएट द अपॉर्चुनिटीज़ जो यहाँ पर हैं पाकिस्तान के लिए, वो यहाँ पे शोकेस करने की. पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड की तरफ से मैं आपको ये बहुत अच्छी तरह था, पाकिस्तान इज़ ओपन फॉर बिजनेस, पाकिस्तान वाज ओपन फॉर बिजनेस. यहाँ पे आके डायस्पोरा को इंगेज करने का मकसद सिर्फ ये है कि इतने सारे लोग हैं जो बड़े साइड लाइन्स पे खड़े होते हैं कि यार इज इट द राइट टाइम और नॉट. आई एम टेलिंग यू कैटेगोरिकली देयर इज सो मच गोइंग ऑन इन पाकिस्तान, देयर इज सो मच यूथ, देयर इज सो हंग्री, they want to do something, और हम लोगों को आगे बढ़ के उन लोगों को सपोर्ट की ज़रूरत है. इस वक्त पाकिस्तान deserves better, Pakistani people deserve better, and there's a lot of potential we can do. First time on this large scale, successful companies who have invested in Pakistan, और उन्होंने आके अपनी success story सुनाई है, और and the companies who want to go to Pakistan, a lot of their questions were answered, and this is a great step towards bringing more and more investment to Pakistan. And I think this good effort should be continued on annual basis and followed up.
थैंक यू सो मच। खातिन हज़रात, आपने हमारी ये रिपोर्ट मुलाज़ा फरमाई जो कि पाक-U.S टेक इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस के हवाले से थी, जो कि स्टैनफोर्ड कैलिफोर्निया में मुनक़िद हुई। उम्मीद है आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। हमारा वक्त अब ख़त्म हुआ। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। Parents, show your love with Tahir Halal Kids multivitamin gummies, made in the USA and certified halal. Delicious and packed with essential vitamins, these gummies keep your little ones healthy, happy, and full of energy. No fuss, just fun, because good health should taste great. Tahir Halal. Love, nutrition, and care in every bite. ताहिर प्रोडक्ट्स आपके खानदान की सेहत के लिए बेहतरीन हलाल विटामिन्स और सप्लीमेंट्स, खालिस, मियारी और फखर के साथ अमेरिका में तैयार करदा। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to patients in the comfort of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, Kaba Fusion has 7 state-of-the-art pharmacies located across the country. Visit us at kabafusion.com to learn more about the benefits of in-home infusion therapy.